पेपर में ये रिप्रेजेंटेशन टिपिकली ड्रॉ होती है विदाउट देम मेंशनिंग के ये इन है या आउट है, वो बस ड्रॉ करके दे देंगे डायग्राम में और वो कहेंगे कि क्या हो, ठीक है, क्रॉस या डॉट कुछ ना कुछ वो आपको लगा के देंगे। नहीं तो अगर वो आपको लगा के नहीं दे रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन क्या बनेगी, देन यू हैव टू मेक द क्रॉस और डॉट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ये फॉलो सो करंट when it's coming out so it's like the screw is pointing out तो आपको सिर्फ डॉट नजर आ रहा है, पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, you can't see the exact thing, the full thing। अच्छा, so this representation is typically used to show a direction of flow of current। let's say कि into the page की हम रखें, आसान रखते हैं, ठीक है, tell me hold up your hands, right hand grip tool यूज करेंगे आप, हम ना शो में कि किस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होनी चाहिए। नहीं वो तो है परमानेंट मैग्नेट, वी आर सेइंग कि करंट की केस में सो करंट इज फ्लोइंग इनटू द पेज बिकॉज़ वी कैन सी द बैक, राइट, सो द थंब नीड्स टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। The curve of your finger would show the direction of magnetic field. So hold your hand and show me, hold up your hand and show me कि किस direction. That would imply current is going up, but current is not going up. So rotate your hand. आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, left, right, सारा कुछ कर सकते हैं। आपका hand तो free to move है ना, so you can move your hand. You can point into the page, you can point out of the page, you can point left, any direction. सारा दिखाए मुझे कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए। So first of all, if the current is going into the page, what needs to point into the page from your right hand? Sorry, thumb. Okay, fine. So the thumb needs to be pointing in. Can you point the thumb into the page over here? Yes, you're right. हाथ दिखाए मुझे, thumb into the page। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, फाइन। ये तो आपका थंब नीचे हो, आपने ये किया ना, ये तो है करंट इज फ्लोइंग डाउन, लाइक ओवर हियर वी वांट करंट टू बी फ्लोइंग इनसाइड द पेज, दैट इज गोइंग अप। सो इमेजिन द वायर अगेन, सो हियर इज योर वायर, यू आर गोइंग टू ग्रिप इट, या तो ये ग्रिप कर सकते हो या यहाँ ग्रिप कर सकते हो, यही दो पॉसिबिलिटीज है ना। सो यू आर गोइंग टू ग्रिप इट, बल्कि अपने अपने पेजेस के साथ भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड के साथ तो चलो वो सामने है, पेज के साथ भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पास पेपर या एग्जाम में जो आप वो तो आप पेज के साथ करोगे। यस, Rania is fine, yes, Ryan is fine, Jannat is not fine, that's not the right hand, that's the left, that's better। So when you use your right hand, so where do you see the kernel magnetic field? तो आपको ये तो पता चल गया है कि magnetic field would be in concentric circles। ये आपको समझ आ गई है, इस बारे में बताया। हाँ? Clockwise बना या anti clockwise बना? Clockwise बना, right? Okay, fine। So this is what it should look like. Is that it? Agreed? So far so good? Right, perfect. So you're right. You're right. You're absolutely right. Okay? Well done to you. We're doing some pretty complex things. Okay? That would not be the right thing. Lekin student find this hard. Okay? It's not complex. It will be very easy for you. Okay? So, but so now that you have this, you have one magnetic field which was due to the permanent magnets. We have got another magnetic field which is due to this wire. Agreed? I see. So because you have two magnetic fields, it means that there must be an interaction, sort of like this same principle. You've got two magnets, they are going to interact. या तो वो repel करेंगे, attract करेंगे, some magnetic field will go from here to there, and there's got to be some interaction. It can't be कि oh तुम इधर हो, मैं इधर हूँ, I don't care if you're here.
तो आप कहेंगे ओके फाइन, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूँ। क्या क्या कहते थे, लिव एंड लेट लिव, ये वाला काम तो नहीं चलेगा, राइट? ये वाला काम चलेगा। So there's bound to be some interaction over here. ये तो agree हो। अच्छा, how do we determine that interaction? How do we determine that? तो ये जो magnetic field है, does it have a magnitude? Is there something known as the magnetic field strength? Does it have an associated magnitude? Size है magnetic field का, strong magnetic field है, ज़्यादा size of the magnetic field है, यहाँ कम magnetic field है, right? To the sides, weaker magnetic field, that means the strength or the magnitude of the magnetic field must be small. Is that true? Does it have a magnetic field? Does it have a magnitude? Size है इस quantity का? Yes, there is. ठीक है? Magnetic field, although आप लोग उसको measure नहीं करते, लेकिन it does have a unit. Yes. हाँ? Invisible होती है, लेकिन उसकी strength हम measure करते हैं. It is a quantity that's measured. Like current आप measure कर लेते हैं ना मीटर पे. तो ये Tesla, this is measured in Tesla. ठीक है? Magnetic field. It's a quantity. It has a magnitude. चलो, I'll give you an easy question. Does it have an associated direction as well? कि या आप बस कहेंगे कि हाँ बस वो magnetic field strength इतनी है, लेकिन it's not going from north to south, it's not coming from south to north, it has no direction. Does it have a direction? So it has a direction. So what are those quantities known as? Quantities that have a magnitude as well as a direction. What are they known? Vectors. Vectors, right? So can somebody help me with vectors? पुराने ज़माने की चीज़ हो गई है, बहुत पहले अपने O level का टाइम है, तो आप मुझे शायद रिमाइंड कर देंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि वेक्टर्स के केस के अंदर मैंने एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इसकी। If there are two vectors in the same direction, what happens? So let's say for example you have two vectors, two forces going from left to right. So you've got 2 newtons and 2 newtons. What's going to happen as a result? Resultant क्या? Sorry? They're going to add up. So they're going to add up. So क्या कुछ आप लोग That makes sense. So there are two vectors, two forces, 2 newtons each. How do you find the resultant of that? Resultant is one effective net resultant. You add them together. How about if I've got two more resultants? 2 newtons and 2 newtons. They're going to cancel out. Cancel out. Really? Minus out. So, how many people are sure of this? At least confidence को the answer. अगर तो sure नहीं है तो नहीं वो तो अलग अलग एग्जाम्पल नजर नहीं आ रहा क्लियर? नहीं वो कह रही है कि 3 इस तरफ जा रही है किस तरफ जा रही है, वो दो डिफरेंट एग्जाम्पल है। 2 न्यूटन इस तरह जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि रिजल्टेंट विल ऐड टुगेदर, और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं विद द सेम मैग्नीट्यूड तो कह रहे हैं कि वो आपस में कैंसिल करना शुरू हो गए। ओके, सो यू फील श्योर अबाउट दैट। ओके, गुड फॉर यू। व्हाट वी गोइंग टू डू इज कि यही वाली सिचुएशन इन वेक्टर्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ये भी वेक्टर है, दिस इज आल्सो ए वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। एक वेक्टर है ब्लैक वाली फील्ड लाइंस, और दूसरे वाला है ग्रीन फील्ड लाइंस। ठीक है, these are also two vectors. ठीक है, and we're going to do the same thing here. Okay, so we'll start with this. We'll start with the top side first. टॉप साइड पे आप मुझे ये जरा बताएं कि ग्रीन लाइन की डायरेक्शन क्या है? Where is the green line directed to? Again, be specific. Right. Up, down, right, left, big, small. So, north to south direction, where going from left to right. Huh? Fine. What about the black one? For the magnet, for the wire. तो उस केस में क्या किस डायरेक्शन में है? At this junction, just at the top end.
राइट लेफ्ट ये वो सारा कुछ नॉर्थ टू साउथ एंड लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट. So because the two vectors are in the same direction, what do you think should happen over here? So they're going to add up, is that it? So if I drew, आप लोग ये draw कर चुके हैं राइट वाले पोर्शन में? हाँ. करें ना जल्दी, आप साथ साथ करें ना काम. क्योंकि अब मैं उसको डिस्क्राइब करने लगा हूँ सब्सिक्वेंट डायग्राम. जल्दी करें. अगर किसी ने कीड़ा मकोड़ा बनाया ना तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हो रहा हूँ. I am drawing with a ruler. You need to be drawing with a ruler. Not at all, please, my dear. I'm not at all, please. आप इधर भी आप ड्रॉ करेंगे, इधर भी ड्रॉ कर लेंगे. ये तो रफ काम है ना. आपकी एक्चुअल कॉपी बुक के लिए. This is where this can come in handy. अगर इसका आपको वो चाहिए होगा you can have it. ठीक है? This is what it is. अभी एक्सपेरिमेंटल है, हो सकता है सब्सिक्वेंट लेसन्स हम इंटायरली इंग्लिश में करें. एक्सपेरिमेंट हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया? नहीं करना? नहीं अभी इसको भी रन करते हैं बस इसके साथ में to see what happens. तो कुछ यही एक काम करें, इसकी वीडियो आती है. I think the video में it should be clear what's written over here. और वीडियो से आप लोग लेकिन बनाना सकते हैं, ठीक है? Write it. I'll try to upload it today as it is. अच्छा, because we have very small amount of time left. तो ठीक है, तो अगर हम इसी चीज के रिजल्टेंट हम बनाने लगे, we got the same north pole here, just like before. We got the south pole here, again just like before. And we've got the current flowing into the page, and there's going to be some interaction between these things. So the new pattern, the resultant pattern, I'll be drawing it in green. Okay? The resultant pattern is such कि ऊपर की तरफ you're saying the vectors are going to add together. So overall the field strength going from left to right is going to be stronger than before. So you had 1, 2, 3, 4, 5 lines before. So you got 1, 2, 3, 4, 5 before. And of course the other ones as well, weaker to the sides, weaker to the sides, right? So you had the same pattern before, but this time you're going to have more field lines towards the top end. 1, 2. So you're going to have an excess, a stronger than before magnetic field towards the top. Can you see that? Compare it with here. यहाँ पर सिर्फ 2 curved lines थी, यहाँ पर ढेर सारी curved lines आ रही. Can you see that? And similarly, now you tell me, इधर left वाला, now look at the bottom end. Look at the bottom end. तो green वाला जो permanent magnet का जो magnetic field pattern है, वो where is it directed? Direction? Sorry? Left to right and not to south, right? But where is the black pattern, magnetic field pattern of? So it is right to left, okay. So it means they're going in opposite directions. Huh? And their vectors, what should happen? Huh? So resultant, अगर हम डायग्राम देख रहे हो, so this is the resultant field pattern. So if we're going to talk about the resultant field pattern, so you're saying that the bottom end should not be as strong because some of the lines they should have cancelled, they're no longer there. So I can just safely get rid of
some of these lines. I'll just get rid of these. So they have cancelled, right? या एक इनमें से मैं कैंसिल कर देता हूँ, दूसरे वाले को मैं डिफ्लेक्ट करके दिखा रहा हूँ. It was supposed to go straight, but now it's bent away. I think it's been repelled away. It's deflected. And there is this empty gap over here. So there is an excess of force here, and there is no force here. So, in other words, what we're saying is, so here's a duster, here's an eraser, and I'm going to apply a one-sided excess of force from one direction. दूसरी तरफ से नहीं बनाता मैं. What's going to happen? So I'm again, फिर से मैं बता रहा हूँ. So here's a duster, and I'm going to apply a one-sided stronger force, और दूसरी तरफ से भी not as much forces. ठीक है? What's going to happen? Accelerate. एक resultant force develop. एक resultant force develop होगे, and using Newton's law, you can even tell me that resultant force would have a resultant acceleration. Right? So you can use the second law of motion and say, okay, because there is a resultant force, there is going to be a resultant acceleration. So you move. You can say that. Do you agree to that? अगर disagree करते बताएंगे कि सर आप grossly mistaken. Newton ने ये बात नहीं की. Huh? Okay. So now that we understand that, so there is an excess of force over here. So what's going to happen to the wire because of that force? What's going to happen to that wire? Now there is an excess of force due to those like fields, same direction के like fields, they are together. It's like a lot of north together. ठीक है? Like fields, same direction में patterns जा रहे हैं. They're strong together. और इधर गैप है, इधर है ही कुछ नहीं. So it's not me. तो ये जो इधर से repulsion होती थी due to the like fields, so it's not being met with an equal repulsion from the other side. So there's a one-sided force going downwards. Can you see that? There's a one-sided downward force. ये नजर आ रहा है? So what's going to happen to the wire? What's going to happen to the wire? It should move. There's going to be a force on the wire. It's going to move. There's going to be an overall resultant force on the wire. It's going to move. It should move. So, अगर हम इस चीज को एक nutshell में एक bigger picture के अंदर अब इसको wind up करना शुरू करें, हम कहते हैं okay fine, we started with some magnetic fields. Namely, we started with the electromagnetic field, जो कि wire से could have come from solenoid as well. And we placed it within an external magnetic field. The external magnetic field started interacting with this existing magnetic field. We saw how to interact with them using our knowledge of vectors, and finally we were able to determine a resultant diagram. So far so good. ये सारी जो जद्दोजहद मुसीबत से आप गुजरे हैं ना, जिसमें आप कहेंगे कि अच्छा यार मेरा फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कितनी तकलीफ से गुजरा हूं मैं, ये वाला जो काम है, इट्स सिंप्लीफाइड. ठीक है? इट्स सिंप्लीफाइड यूजिंग something known as Fleming's left hand rule. So you don't have to go through all of these diagrams and say कि अच्छा आपको प्लस किधर मिल रहा है, माइनस किधर मिल रहा है, कौन सा कैंसिल करेगा, कौन सा आपस में मिल जाएगा, क्या होगा. You don't have to go through that. Instead of that, you can say, okay, let's just apply Fleming's left hand rule. Let me show you how. And you can determine the direction of this force directly. ठीक है? अच्छा, सबसे पहले धागा वास्ता है लेफ्ट और राइट में कुछ डिफरेंशिएशन. ठीक है? राइट राइट लेफ्ट
left. Not both of them, only one of them. See, I told you it's required. Okay? So left. This is the left hand rule. Right hand के साथ एक और rule है. This is with motors going from electrical forms of energy to kinetic. This is motor. ठीक है? Left hand rule. Right hand generator के लिए यूज होगा, वो बाद में. ठीक है? Don't confuse. Left. अच्छा. So बल्कि इसको एक और तरीके से मैंने इसको याद रखने का एक अच्छा सा तरीका निकाला था. मैंने कहा कि बचपन में हमने कभी अगर अल्फाबेट की थी तो अगर तो आप मुझे जैसे थे तो आप भी पढ़ते होंगे कि LMNOP. ठीक है? तो अगर आप स्मार्टर थे तो आपको ये पता होगा कि इट्स LMNOP. राइट? पता था कि वो LMN. नहीं, मुझे पता ही नहीं था LMNOP. ठीक है? हमारा हमेशा LMNOP था. So anyways, so अगर आप इसको अल्फाबेटिकली अगर सिर्फ याद रखें, so left and motor, LM. ठीक है? The other one is right and generator. They don't go together. LN. ठीक है? Left and motor, they go together. It's just an easy way of remembering this. So I'm not going to go with the function of DC motor yet. I'm going to start that. वो बहुत huge चीज़ है, उसको समझाने के लिए I require some time. However, I am going to give you a small piece. One question आप मुझसे पूछिए. सर जब हम लोग यही चीज़ रिपीट करेंगे आउट ऑफ द पेज, हाँ? यही चीज़ रिपीट करेंगे आउट ऑफ द पेज, तो करंट इज गोइंग आउट ऑफ द पेज, तो Okay. ये ऑपोजिट हो जाएगा ना. Yes. So she has a very good question. वो कहते हैं what happens if we reverse the direction of one of those fields? तो okay, अगर मैंने out of page किया, it means now the magnetic field line will be in the counterclockwise direction. So counterclockwise, counterclockwise, counter. And this time the fields that are going to add up are going to be the fields. Sorry. The field lines that are going to add up are going to be the ones towards the bottom. They are in the same direction now. Or top वाले जो है, they are cancelling each other. They are in opposite direction. So that brings us to a very important observation as well. Okay, observation ये है कि when you reverse by reversing current or magnetic field or F reverses. यानी कि it goes in the opposite direction. Okay? So you can change the direction of force by simply either reversing the direction of current or reversing the direction of the magnetic field. So the task I'm going to give you guys is this. Rather than this as an external magnetic field, I'm going to give you another magnetic field to interact with. You've got two currents going out of page. इनकी interaction मुझे दिखाएंगे आप अभी. You've got a current going out of page and a current that is going into page. मैंने उल्टा बोल दिया. ये नहीं हो गया होगा. वही प्रयोग वाला जल्दी से बने करें. इसके देखिए फील्ड पैटर्न्स कैसे बनेंगे और हाउ विल द पैटर्न्स गेट रीइंफोर्स्ड, हाउ विल दे कैंसिल ईच अदर, ये वाला काम है. अरे आप करिए जल्दी से. ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है. ये भी चाहिए लेकिन rather than me showing you everything, मैंने जब आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू मैनेज दिस. हाँ जी, बनाइए इसको. व्हाट डू यू गेट? What do you get? Can you repeat the question? So draw the field patterns as they interact with one another
क्योंकि इसके भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. Where will they add together? Where will they cancel each other? And remember the rule: vectors में same direction add, opposite direction तो cancels. एक दोनों को देखना होगा दोनों हाँ? इसको सिम रिकॉर्डिंग बंद कर लें, ठीक है?